Assalamualaikum students, today in the course of positive psychology, we will study the concept of gratitude. Defining gratitude, the concept of gratitude recently has attracted considerable interest in the popular culture. So this concept has been widely investigated, studied and focused of the scientific researches in different cultures and societies as well. And people with a great interest have been discussing the gratitude क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग और इतना है और हमारी डेली लाइफ से ये जो है वो बड़ा रिलेट करता है. Gratitude is the appreciation of what is valuable and meaningful to oneself. It is a general state of thankfulness and or appreciation. So we appreciate all those things we are having in our life, and we value our life, we value ourselves, and we give meaning to whatever we are having in life, and that is a general state of thankfulness, a general sense of thankfulness and appreciation. We usually say thank to our own self, on own life, and we appreciate our position, current status, and whatever we have been blessed. तो ये एक तरीके से appreciation है कि अपनी लाइफ को वैल्यू देना, अपने आप को अहमियत देना और अपने आप को एक शुक्रगुजारी वाला एक सेंस जो है वो हमारे अंदर मौजूद होता है. Grateful responses to life can lead to peace of mind, happiness, physical health, and deeper, more satisfying personal relationships. So, grateful responses toward life, how the way we respond to our life, the way we deal with our life. So, if we are grateful toward our life and we are thankful whatever we are having in life, it will result in the happiness, and it will promote our physical health as well. There will be harmony in ourselves. We will be mentally relaxed. We will be cool. We will be more calm, and we will be more satisfied with our relationship and the other blessing we are having in our life. तो जितने grateful responses हैं कि आप किस तरह रिएक्ट करते हैं अपनी लाइफ की तरफ, थैंकफुल हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है सब है, तो क्या होगा उससे? उसके पॉजिटिव इफेक्ट होंगे ना आपके ऊपर कि आप फिजिकली भी अच्छा होंगे, हेल्थी होंगे, यू विल बी मेंटली रिलैक्स्ड, तो एक मेंटल स्टेट भी आपकी एक जो कूल होगी, काम होगी और आपके अंदर एक हार्मोनी मौजूद होगी. Gratitude may in fact be a positive universal characteristics that transcend historical and cultural periods. So that is considered a positive and universal characteristics that is not confined to a specific culture, a specific group, specific society, but these characteristics have been transferred from different people in ourselves. कि हमारे different historical culture period जो वो time period गुजरा है, the characteristics of gratitude, the sense of thankfulness has been transferred. तो वो एक यूनिवर्सल चीज है. दुनिया कहीं भी चले जाएं, you visit any place, any country, any society, you will find people showing and expressing gratitude toward the blessing. और आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो नहीं करते शुक्रगुजार, लेकिन आपको सोसाइटी कल्चर मिलेंगे. Therefore, eliminating the nature of gratitude and its functioning in both individual and societal context might help to elucidate cross-cultural similarities and differences in emotional experience and expression, and consequently advance psychology mission in identifying a taxonomy of human strength. So, if we focus on the nature of the gratitude and how gratitude functions in different domains of our life at individual level and societal level, we can investigate or understand the nature of the gratitude in person to person and societies, different societies as well. So this investigation and this understanding will help us in gaining insight in the cross-cultural similarity and differences exist in the emotional expression of the gratitude and other virtues. तो हमारे अंदर जितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, we can also understand the similarity and differences exist in showing specific kind of attitude. तो हमारी वो उसको भी अंडरस्टैंड करने में मिलेगी, and then we will be able to understand the early mission of the psychology and the advanced
was mission of the psychology. And what was that mission? That mission was to identify the human strength. कि आपने टैक्सोनॉमी, आपने बताना है ये ह्यूमन स्ट्रेंथ है, ये ह्यूमन की क्वालिटीज है. पॉजिटिव साइकोलॉजी यही तो कहती है कि we should more focus on the humanistic. We have to see the positive aspect of human personality rather than the negative aspect. तो हमें वो ज्यादा फोकस करना है. तो ग्रेटिट्यूड को अंडरस्टैंड करने से we can also understand the different societies, different people, different group as well. Gratitude as an emotional response to life. Gratitude is derived from the Latin gratia, meaning grace, graciousness or gratefulness. So this word has been derived from the Latin word gratia, and it means something is graceful, grace and gratefulness. It also discusses the gratefulness of something. So all derivates from this Latin roots have to do with kindness, generousness, gifts, the beauty of giving and receiving, or getting something for nothing. So all derivates discuss the same thing, like kindness, generousness, gifts, beauty, what we receive, what we give, and और क्या चीजें हैं इसमें, कितनी काइंडनेस है, कितनी चीजें, ये सारे ब्यूटी से रिलेटेड, अच्छी चीजों से रिलेटेड. गुड, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू समथिंग गुड वी हैव इन आवर लाइफ. तो लाइफ की अच्छी चीजों को डिस्कस करना, लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस करना, दैट इज बेसिकली द ग्रेटिट्यूड. एज ए साइकोलॉजिकल स्टेट, ग्रेटिट्यूड इज अ फेल्ट सेंस ऑफ वंडर, थैंकफुलनेस, appreciation for life. If we consider it or understand the nature of the gratitude from the psychological perspective, so then we see that a person who express gratitude toward life, it means he is having the sense of wonder. He know what to appreciate and how to appreciate, and he remains thankful to life and toward the blessing he or she is having. तो ये एक साइकोलॉजिकल से एक सेंस डेवलप होता है. आपके अंदर सेंस है तो आप लाइफ को अप्रिशिएट करेंगे, उन चीजों को फोकस करेंगे जो आपके पास है. अगर सेंस ही नहीं है तो फिर वो नहीं होगा. तो सेंस जो होता है दैट डिटरमिन्स योर ओवरऑल बिहेवियर और योर attitude. It can be expressed toward others as well as toward interpersonal nature or non-human sources. So we can be grateful toward variety of things. It is not related to oneself. Suppose if you are a grateful person, it doesn't mean you are considering only positive aspect of your own life and you are thankful toward the blessing you are having in life. You remain thankful to other as well. If someone provided you help on time, then you will be thankful to him. And similarly, you can also be thankful about the nature, the environment, and the non-human sources as well. And we can also show thankfulness toward the animal. And we should be thankful to Allah Almighty, who has blessed us with a lot of things. तो अल्लाह का तो हमने करना ही है ना, अदा हमें करना चाहिए. उसने हमें बहुत कुछ दिया है लाइफ में कि जिसको हम कंसीडर भी नहीं करते हैं कि उसने और कुछ ना हो. तो अगर हमारे पास हेल्थ है, हमारे पास जो है हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, हम फिजिकली फिट हैं, तो यही हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ी बात होती है. तो हमें अल्लाह का तो शुक्र अदा करना ही करना होता है. इसी तरह एनिमल्स हैं, हम एनिमल्स के भी बड़े वो होते हैं. और एनिमल को हम ये तो नहीं कहते हैं आई एम थैंकफुल टू यू, मैं तुम्हें शुक्रगुजार हूँ, ऐसा नहीं होता. आप अपने एटीट्यूड से शो करते हैं कि यू आर थैंकफुल टू एनिमल. जैसे आप देखें कि आपने बहुत सारे देखे होंगे, डंकी कार्ट देखा होगा और ये सारे, तो उनके पे कितना सामान लादा हुआ होता है. तो हम देखें तो हम वो एनिमल, हम उसके शुक्रगुजार है ना कि वो हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आ रहा है. तो जब कभी आपकी ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे, एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे, घोड़ों का इस्तेमाल करते थे. तो हम शुक्र हमें करना चाहिए ना इनका. इसी तरह नेचर है, ब्यूटी है, और प्लांट्स हैं और फ्लावर्स हैं जिनसे हम अपने घर को खूबसूरत बनाते हैं प्लांट्स से. तो we should be thankful toward them. तो gratitude can be expressed in different forms. तो आप grateful हैं तो it means you are thankful toward a lot of things. Some of the most profound reported experiences of gratitude can be religiously based or associated with reverent wonder toward an acknowledgement of the universe. So अगर आप gratitude को देखें तो इसके जो experiences gratitude के जो रिपोर्ट हुए हैं, जो religious based हैं, वो किस चीज से हैं कि हम इस कायनात को acknowledge करें.
जैसे सपोज अगर आप देखें तो हाउ कैन बी ग्रेटफुल टुवर्ड द यूनिवर्स, हम कैसे एक्नॉलेज करते हैं, हम कहते हैं दिस इज द वर्ल्ड, दिस इज यूनिवर्स, वी डिस्कस द ब्लेसिंग अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स। लाइक आप किसी कंट्री की बात नहीं करते, किसी एक उसकी बात नहीं करते, जब हम अपनी लाइफ को डिस्कस करते हैं तो वी काउंट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सपोज सनलाइट, वी कैन बी थैंकफुल ड्यू टू द सनलाइट, मूनलाइट, एयर एंड प्लांट्स एंड और बहुत सारी देखें क्लाउड्स, रेन, ये क्या है, ये सारी चीजें आपकी किस में काउंट होती है, यूनिवर्स में। कि वी हैव टू एक्नॉलेज द वर्ल्ड, वी हैव टू एक्नॉलेज द यूनिवर्स, कि हमारी वो जो रिलीजियस बेस्ड है ना हमारी, कि हम इन चीजों को ग्रेटिट्यूड को एक्सपीरियंस करते हैं, तो किस तरह करते हैं हम, यूनिवर्स को वो करके उससे स्टार्ट करते हैं। एज सच ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इमोशन दैट रिलीजन सीक टू प्रोवोक एंड सस्टेन इन बिलीवर्स। सो ग्रेटिट्यूड हैज बीन कल्टिवेटेड इन people through religious teaching. So religion asks us or demand us to sustain and to believe in the universe and the creator of that universe. तो जो रिलीजन होता है उसने इसको बड़ा वो किया है, तो वो ज्यादा किस चीज को प्रोवोक करते हैं, द बिलीवर्स को। ठीक है, रिलीजन वांट टू प्रोवोक द बिलीवर्स, के बिलीवर्स को बताता है रिलीजन अगेन एंड अगेन रिमाइंड ऑफ अस अबाउट द ब्लेसिंग have been given by the Allah Almighty, and we are human being, we have sent on this earth planet to live here, and we have been blessed with a lot of things. So ये क्या है, we have believed in our Allah, we have believed in the blessing, तो वो क्या है, वो सारी चीजें उसमें यकीन करने वाले, अल्लाह पर ईमान रखने वालों को, खुदा पर ईमान रखने वालों को रिलीजन जो है वो करता है कि भाई देखो इस तरफ शुक्रगुजार बनो कि इतना कुछ दिया है। Thus, for many people, gratitude is as a core of spiritual and religious experience. So that's why so many people experience the religion as the spiritual factor or a religion. They can consider it as a religious spiritual experience. तो gratitude को वो कहते हैं कि आपका एक रूहानी जो तजुर्बा होता है ना, वो किससे होता है, gratefulness से होता है, thankfulness से होता है। Means the more you are grateful toward Allah and His blessing, then you will be more spiritual and religious. तो ये religious spiritual काइंड का एक एक्सपीरियंस है जो हम करते हैं। तो बहुत से लोग इसको स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्सपीरियंस भी कंसीडर करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजर हैज द कैपेसिटी टू अप्रिशिएट अगेन एंड अगेन फ्रेशली एंड नाइवली द बेसिक गुड्स ऑफ लाइफ विद ऑल प्लेजर, वंडर एंड इवन एक्सटेसी, हाउएवर स्टिल दिस एक्सपीरियंस मे हैव बिकम टू अदर्स। तो सेल्फ एक्चुअलाइजर, हु आर सेल्फ एक्चुअलाइजर, हु utilize all of their potentials, all of their capabilities, so they appreciate, they continuously appreciate all blessing of their life, and they express different kind of emotions. They become excited and express pleasure, lot of pleasure, while expressing gratitude toward life and all the blessing. तो ये इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजर में, कि अगेन एंड अगेन बड़े वो फ्रेशली और बड़े उससे वो ग्रेटफुल रहते हैं अपनी लाइफ की तरफ। दिस एबिलिटी टू फ्रेशली अप्रिशिएट एवरीडे एक्सपीरियंस enables self actualizer to drive a sense of pleasure, inspiration, strength from even mundane happening. So this ability make him able to experience everyday thing, कि उसको अप्रिशिएट करते हैं हर चीज को, क्योंकि ये ओपन होते हैं ना बड़े। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजर के इनके जो भी एक्सपीरियंस लाइफ में हो रहे होते हैं, डेली लाइफ में हो रहे होते हैं, तो ये उसको जो है वो करते अप्रिशिएट करते हैं कि ये वो नहीं होते, ये बड़े ओपन होता है, मतलब चीजों को वो करके नहीं लेते हैं, तंग नजर होकर नहीं चीजों को देखते हैं, ओपनली देखते हैं जो भी हो रहा है, whatever is happening around them, they gain experience from that, they try to learn, get lesson from all things। वो कहते कुछ लोग होते हैं बेजान चीजों से भी लेसन ले लेते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इनकी जो एबिलिटी होती है ना, उनके अंदर के एक सेंस ऑफ प्लेजर डेवलप होता है, कि उनके स्ट्रेंथ, दे फील स्ट्रेंथ इन ऑन सेल्फ। जो वैसे भी दुनियावी चीजें हो रही होती हैं, दे आल्सो गेट स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स। तो एक पर्सन जिससे कुछ सीखना होता है ना, तो वो फिर एक ऑब्जेक्ट से भी कोई चीज सीख लेता है, उससे भी लर्न कर लेता है। तो वो जो सराउंडिंग में जितने एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं ना, दे ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट,
Gratitude may lead to other positive subjective experiences. Empirically, gratitude is a pleasant state and linked with positive emotion, including contentment, happiness, pride, and hope. So, gratitude is associated with the subjective experiences. Subjective, how a person is feeling about a thing, how a person is thinking about a thing, what kind of emotion person is experiencing, what is going on inside of that of a person, क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं. तो gratitude may cultivate positive emotions, feelings, and may lead to positive subjective experiences. So gratitude is basically a pleasant state, and a person feel good and has a sense of pleasure. This gratitude is associated with the positive emotion. It cultivates positive emotions. It make you satisfied with your life. It increase your happiness. It make you feel pride, and it help you enhancing your sense of hope related to something. कि वो लाइफ अच्छा होगा, ठीक होगा, खुश होते हैं, मुतमईन होते हैं. तो ये इमोशंस जो हैं वो पॉजिटिव सब्जेक्टिव उसके एक्सपीरियंसेस को शो करते हैं. A conscious focus on gratitude make life more fulfilling, meaningful, and productive. So gratitude, if person deliberately and consciously pay gratitude to life and the blessing, and to even gratitude to others and the nature, and he or she express gratitude in different form in variety of situations, then his life will be more purposeful, meaningful, productive and fulfilling. कि person जो है उसकी लाइफ सही होगी, प्रोडक्टिव होगी, कुछ ना कुछ करता रहेगा, उसके लाइफ का कोई पर्पस है, कोई मीनिंग है, वो कैसे यूजलेस जिंदगी नहीं गुजार रहा है कि बस ठीक है ये मिल गया वो मिल गया, वो बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन नजर आएगा. और कॉमन सेंस व्यू दैट पीपल फील ग्रेटफुल व्हेन दे रिसीविंग अ बेनिफिट दैट नेचुरली रिजल्टेड फ्रॉम अनदर एक्शन. सो people can be grateful for receiving something good from another person. कि जो कोई दूसरा कोई एक्शन कोई ले रहा है, किसी ने कोई एक्शन लिया और उसकी वजह से उसको कोई एक बेनिफिट हुआ, रिसीव किया, then person can be grateful. कि सपोज अगर एक पर्सन है उसने कोई एनवायरमेंट से कोई वैसी चीज रिमूव कर दी, तो that will be beneficial for another thing. तो person can be grateful to that. जैसे सपोज अगर आप जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी आते हैं, आप कॉरिडोर से गुजर रहे हैं, स्वीपर झाड़ू लगा रहा है, स्वीपर वहां से गंदगी को साफ कर रहा है ना, तो आपको देखकर अगर वो झाड़ू को वो रुक जाता है कि आप वहां से गुजर जाएं, ठीक है, उसके एक्शन की वजह से आपको बेनिफिट हुआ, आपके कपड़ों पे कोई मट्टी नहीं गिरी, कुछ नहीं हुआ, तो क्या होता है, यू शुड बी ग्रेटफुल टू हिम. तो बहुत से लोग स्वीपर का भी शुक्रिया अदा करते हैं. तो स्वीपर रुक जाता है ना कि ये पर्सन गुजर जाए, तो वो उसको शुक्रिया अदा करते हैं कि शुक्रिया आपका, क्यों, जो मेहरबानी उस पर्सन ने की है उस पर वो शुक्रगुजार है. द फर्स्ट इज एन इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट फॉर ग्रेटिट्यूड इज एन इंटरपर्सनल इमोशन व्हिच precludes it from being directed toward oneself. So interpersonal context में भी gratitude को explain किया जा सकता है. Gratitude will be interpersonal emotion in respect to the interpersonal context. तो ये आपके अपनी जात से हटकर दूसरों के साथ है वो relate करें. Second, implicit in the experience of gratitude is the recipient theory of mind from which he or she infers another well-meaning intention resulting in one feeling loved and esteemed. So second एक gratitude को experience किस तरह किया जाता है, but that person how is he or she is interpreting the another action, कि उसको क्या मीनिंग दे रहा है, कि दूसरे पर्सन की इंटेंशन को किस तरह मीनिंग दे रहा है, कि जिससे उसके अंदर जो है सेंस ऑफ बीइंग लव्ड वो उसको अच्छा फील हो एक पर्सन को. तो उसके उस पे रिसिपिएंट थ्योरी भी है कि आपके माइंड की, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं दूसरे के एक्शन को. अ पर्सन फीलिंग ग्रेटफुल माइट बी मोर इंक्लाइंड टू फील लव्ड एंड केयर्ड फॉर बाय. सो एक पर्सन जो है अगर वो ग्रेटफुल है तो वो ज्यादा क्या होगा, वो केयर और लव जो है वो उसको इम्पोर्टेंस देगा. ये भी हो सकता है कि पर्सन जो है वो चाहे कि भाई ठीक है वी शुड बी ग्रेटफुल, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें जो है केयर हो हमारी लाइफ में और हमें हमारा ख्याल किया जाए, हमें चाहा जाए, हमसे मोहब्बत की जाए. फ्रॉम दिस मोर एक्सपेंसिव पर्सपेक्टिव ग्रेटिट्यूड as its foundation. In order to acknowledge the cost of the gift, the recipient must identify the psychological state of the one who has provided it. That is considered expensive perspective of gratitude, that if one want to acknowledge the cost of gift, उसको कहते हैं वो अगर देखना चाहता है कि उसको जो गिफ्ट मिला है, अगर वो उसकी कॉस्ट को देखना चाहता है, उसको एक्नॉलेज करना चाहता है, तो उसको ये देखना चाहिए कि इसके आइडेंटिफाई करना चाहिए उसके ये जो
पर्सन है जिसने उसको प्रोवाइड किया है वो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। जो रिसीव कर रहा है ना गिफ्ट वो देखेगा कि पर्सन की जो है वो किस हैसियत से उसने मुझे दिया है, क्या सोचकर उसने मुझे दिया है। The benefactor is giving it's interpreted by the recipient as a freely offered and with that come the acknowledgement that such offering might prove costly to or incur hardship for the benefactor। तो अगर जो उसकी जो गिविंग है, अगर किसी ने जो देने वाला है, अगर उसके एक्शन को लेने वाले ने एक ऑफर के तौर पर जो है वो उसको इंटरप्रेट किया है और उसको देखा है कि ये ऑफर जो है ये कॉस्टली हो सकती है उसके लिए और मुश्किल में डाल जो है बेनिफैक्टर है तो उसको एक मुश्किल में तक डाल सकती है, उसके लिए ये कॉस्ट जो है उसकी ज्यादा हो सकती है। सच एज अंडरस्टैंडिंग ब्लेंड फिटिंगली विद सम ऑब्जेक्ट रिलेशन फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, ये अंडरस्टैंडिंग भी ग्रेटिट्यूड के साथ रिलेट करके इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि एक पर्सन एक चीज दे रहा है दूसरा ले रहा है, तो जो लेने वाला है वो देने वाले की साइकोलॉजिकल स्टेट को भी सामने रखेगा और ये भी देखेगा कि वो जो चीज उसने दी है उसकी क्या कॉस्ट है, वो उसको देने वाले को किस किस्म की मुश्किल पेश आई है। ये सारी चीजें भी रोल प्ले करती हैं ग्रेटिट्यूड में। Gratitude in emotion theory. The term gratitude really appears in the emotion lexicon. Widespread ambiguity and uncertainty concerning its status as an emotion counts for scant attention. क्योंकि ये यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में एक एम्बिग्यूटी मौजूद है और कि हम इसको इमोशन कैटेगरी ना लेकर अनसर्टेनिटी है। That's why this term has not been given much attention as an emotion. तो इस मोशन की जो डिक्शनरी है या उसकी वोकैबुलरी आपको मिलेगी इमोशन रिलेटेड, वहाँ पर ग्रेटिट्यूड नहीं है। You will hardly find it there. In social interaction theory, gratitude was located within overarching coordinates of status and power. But in the connection of social interaction theory, you will find this term in the context of status and power के जो status और power का जो coordinate करती है concepts, तो वहाँ पर ये जो है वो आपको मिलेगा ये word। Appraisal theorists are more inclined to include gratitude within their framework of emotion. So appraisal theorists जो है they have given much attention to this term gratitude and they have considered it as an emotion. तो उसको discuss किया, जो उनका theoretical framework है, they have discussed and elaborated the concept of gratitude as emotion. तो उन्होंने इस पर ज्यादा focus किया। Attribution model emphasizes causal appraisal about event as the main determinants of emotional response. तो जो attribution model है, it focuses on the causes of the events. That's why जो है और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है जो इमोशनल रिस्पॉन्स को लीड करते हैं, उसको डिटरमिन करते हैं, उसको प्रेडिक्ट करते हैं, तो फिर उन पर ज्यादा मॉडल जो है वो फोकस करता है। तो चूंकि ये ग्रेटिट्यूड है, ये भी स्पेसिफिक इमोशंस को जनरेट करने में हेल्प आउट करता है। अगर आप जो है वो ग्रेटफुल हैं टुवर्ड योर लाइफ एंड टुवर्ड अदर्स, तो यू विल फील रिलैक्स्ड, आपके पॉजिटिव इमोशन जनरेट होंगे और आपकी सब्जेक्टिव जो वेल-बीइंग है वो अच्छी होगी। Underlying properties of dimension of causal attribution in combination with even balance influence the direction and magnitude of the felt emotion. तो जो causal attribution है उसकी जो properties हैं, उसकी जो dimension है और तो वो जो है वो direction जो है वो उसको determine करती है, magnitude को determine करती है कि जो emotion है ना, कि हम अगर एक स्पेसिफिक हमारा emotion है उस किस direction में होगा, उसकी intensity क्या होगी, ये डिपेंड करेगा कि causal attribution की जो different properties डायमेंशन है जिसको हम स्टडी करते हैं, तो वो कितना जो है वो किस हद तक डिटरमिन कर रहा है। There are two sets of emotion, outcome dependent and attribution dependent. So here two kind of emotions have been discussed. One was outcome dependent and attribution dependent. General affective reaction of happiness and unhappiness are outcome dependent, whereas secondary emotional reaction of say pride, anger, gratitude follow specific pattern of causal attribution. तो general affective जो reactions होते हैं happiness और unhappiness के, these are basically outcome dependent. और जो secondary emotional reaction है pride, anger, gratitude से related, these follow specific pattern of causal attribution. When we give a specific reason to explain an event that will create some specific kind of emotion, cultivate some specific emotions, and वो हमारे reactions जो है उन्हें एक नजर आएंगे। और जो generally जो हमारे reactions होते हैं वो outcome dependent. In this framework, attribution to another for a pleasant outcome elicit gratitude. So if we consider the concept of gratitude in this framework, then we can say that attribution to another for a pleasant outcome will cultivate gratitude, strengthen the sense of gratefulness in ourselves. तो हमारे जो दूसरों
एक प्लेजेंट आउटकम है और हम उसको एसोसिएट करते हैं इसके साथ, किसी के साथ, तो फिर वो हमारे अंदर ग्रेटफुलनेस को वो करता है कि जैसे सपोज अगर एक अच्छी चीज हुई है और आप उसको एट्रीब्यूट करते हैं, आप रीजन देते हैं कि इस पर्सन की वजह से ऐसा हुआ है, तो इट मींस यू आर थैंकफुल टुवर्ड अ पर्सन। तो फिर उससे क्या होगा, आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जो है वो एनहांस होगी, आपके अंदर वो ऐसे इमोशंस जनरेट होंगे कि जो आपके सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस को स्ट्रेंथन करेंगे। In a goal-based model of appraisal, the consequences of events are appraised for their relevance to one ongoing goal pursuit. So, goal-based model basically discuss the relevancy of events with goal we usually pursue. तो इनके जो consequences जो face होंगे, जैसे एक event है उसके जो consequences हैं उनको इसी तरह उसी के context में जो ongoing goals हैं उसको जो pursue कर रहे होते हैं तो उससे जो related होंगे उसी को जो उसकी relevancy को देखते हुए उसके साथ associate करते हुए अप्रेस किया जाएगा, उन्हें देखा जाएगा कि वो किस तरीके से हैं। Representational system consists of goal standards consisting of goal and attitude and dispositional liking or disliking of object mediate between objective events and the attendant emotional reaction. So our representational system that comprises of goal standards we set to target our specific goals and we have a specific kind of attitude toward the goal attainment. So both these element will be mediating the relationship between objective events and our emotional reactions के हमारा जो एक इवेंट है और हमारा इमोशनल रिएक्शन किस तरीके से, तो उन दोनों में जो एसोसिएशन होगी वो किस पर डिपेंड करती है कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, गोल स्टैंडर्ड्स हैं और हमारा जो एटीट्यूड है, वी लाइक समथिंग और डिसलाइक अनदर थिंग। तो हमें हमारा एटीट्यूड उस तरफ क्या है कि हम किस चीज को कितना पसंद करते हैं, कितना नापसंद करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये दोनों चीजें जो रोल प्ले करेगी तो ही और इवेंट और इमोशनल रिएक्शन में एक हमें एसोसिएशन नजर आएगी। तो गोल बेस्ड मॉडल बेसिकली गोल से उसकी जो परस्यू कर रहे होते हैं और जो कोई इवेंट होता है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है हम उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको देखते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, उनके किस तरह है, उसके रेलेवेंट है नहीं है और किस तरह है कॉन्सिक्वेंसेस, और जिस तरह के वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे गोल परसीव करते वक्त हम उसको उसी जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली उसको रेस करेंगे। In the framework, gratitude is compound to admiration theory and joy. It consists of approving of someone else, praiseworthy actions and feeling joy for the desirability of the outcome. So, we want to achieve desired goal. और हमारा जो आउटकम होता है वो डिजायरेबल होना चाहिए, हम चाहते हैं कि ये आउटकम जो है वो हमें मिले। तो हम जो है वो जो कोई दूसरा जो है वो पर्सन जो है वो कोई ऐसा एक्शन लेता है कि जो उस आउटकम को अचीव करने में हमें हेल्प कर सकते हैं तो वो बड़े प्रेज़वर्दी उसके जो है वो एक्शन होंगे, हम उन एक्शंस को देखते हैं, अप्रूव करते हैं और जो फीलिंग डेवलप होती है, जॉय की फीलिंग डेवलप होती है। तो व्हेनेवर यू अचीव अ डिजायर्ड गोल यू विल फील एक्साइटेड, कि आपके अंदर एक्साइटमेंट होगी, जॉय की फीलिंग खुशी की होगी और आप इसको जो है वो देखेंगे एक प्रेज़वर्दी चीज है आपके लिए। तो दूसरों के जो प्रेज़वर्दी एक्शंस हैं उसको हम अप्रूव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और इस ये जो ग्रेटिट्यूड है बेसिकली इट इज द एलिमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ एडमिरेशन थ्योरी एंड जॉय। कि अगर हम एडमिरेशन थ्योरी को लेकर चले, जॉय को कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें तो ग्रेटिट्यूड विल बी देयर, क्योंकि शुक्रगुजारी का इससे बड़ा ताल्लुक है एक ग्रेटफुलनेस का, कि हम चीजों को किस तरह खुश होते हैं, किस तरह एडमायर करते हैं, ये चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। द वेरिएबल दैट इफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेटिट्यूड आर, और कौन से वेरिएबल हैं जो इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, इसको फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं। द डिग्री ऑफ जज प्रेज़वर्दीनेस के to what extent you have judged praiseworthiness of another person, कि आपने कितना एक तारीफ के काबिल कोई चीज अगर है तो आपने किस हद तक उसको जज किया, क्या समझते हैं कि वाकई एक एक्शन जो है वो तारीफ के काबिल है या नहीं है, देखते हैं ना उसको वैल्यू कर। द डेविएशन ऑफ द एजेंट एक्शन फ्रॉम रोल बेस्ड एक्सपेक्टेशन, जो एक्शन है वो कितना जो रोल है, जो एक्सपेक्टेशंस आपसे की जा रही है उससे कितना डेविएट करता है। सपोज आई टेक एन एक्शन एंड समथिंग इज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, तो वो मेरा एक रोल जो मुझे प्ले करना चाहिए, मुझसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि बीइंग अ टीचर आई विल प्ले लाइक दिस, आई विल कंट्रीब्यूट इन दैट वे, एक मुझसे एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है ना, तो मैं क्या वो रोल में वो जो है वो फुलफिल कर रही हूँ, मुझे एक्सपेक्टेशन है वो क्या कर रही है, तो जो मेरा एक्शन है वो किस तरह डेविएट कर रहा है। दैट
डिजायरेबिलिटी ऑफ द इवेंट, इवेंट को आप किस तरीके से कंसीडर करते हैं कि वो कितना डिजायरेबल, ये चीज जो है वो कितनी आपके लिए जो है वो ठीक है, मतलब आप उससे आप चाहते थे कि ऐसी चीज हो, ऐसा इवेंट हो, तो वो हुआ है कि नहीं। तो हम इन तीनों चीजों को देखते हुए हमारे अंदर जो ग्रेटफुलनेस है वो स्ट्रेंथन करके उसकी इंटेंसिटी पर है। तो अगर आप जो है वो किसी के प्रेज़वर्दी एक्शन को जज करते इवैल्यूएट करते हैं और आपको लगता है कि यस दैट कंट्रीब्यूशन इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, तो वो आप उसको फिर शुक्रगुजारी उतनी ज्यादा, ग्रेटफुलनेस उतनी ज्यादा होगी। और आपका जो रोल बेस्ड एक्सपेक्टेशन है, इफ यू आर टेकिंग एक्शन अकॉर्डिंग टू दैट, तो फिर वो भी उस पर भी एक होता है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इसका रोल था, इसने वाकई ऐसा एक्शन लिया, इसको ऐसा करना चाहिए था। एंड डिजायरेबिलिटी ऑफ द इवेंट, के इवेंट कितना डिजायरेबल है, वो कैसा है कि आप जैसे चाहते थे वैसा इवेंट है। तो चीजें जो अगर बिल्कुल अपोजिट होती हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होता है और हमें किसी का काम को इतना प्रेज़वर्दी लगता नहीं है, या जो इवेंट हुआ है वो अपोजिट हुआ है, अनडिजायरेबल चीज है, आप नहीं चाहते थे ये चीज हो, तो इन दैट सिचुएशन वी विल एग्जिबिट लेस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड अदर्स। The main contribution of this model is that it specifies condition under which gratitude is and is not likely to occur and calls attention to nonsense that might remain undetected in other emotion-based framework. तो ये मॉडल जो है ये explain करता है कि we are grateful in some situation under some conditions, and in some situation we do not express sufficient gratefulness toward others। और कुछ ऐसी चीजें इमोशन बेस्ड जो फ्रेमवर्क है वहाँ पर बाजुकात जो है वो अपनी अटेंशन वो नहीं मिली होती और वो अनडिटेक्टेबल चीजें होती हैं, जिसकी वजह से हम उसको जो है ना वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये ग्रेटफुलनेस है नहीं है, कितनी है। कि कुछ कंडीशन में हर जगह तो नहीं हो सकता ना, तो हम जैसे देखते हैं दूसरे पर्सन का एक्शन प्रेज़वर्दी है नहीं, ये सारी चीजें हम कंसीडर करते हैं। The felt gratitude may reflect the potential desirability of an event independent of the event outcome, such as when someone aids in the unsuccessful search for a lost child. Sometimes we remain grateful to others even we couldn't get the desired results, and an outcome is not desirable for us। कि जैसे हम ना कुछ सिचुएशन है कि मैं चाहती हूँ ऐसा हो और लेकिन जो मैं चाह रही थी मुझे नहीं, वैसा नहीं हुआ, I didn't get the success, but people who have contributed and who helped me during that situation, despite that I couldn't get the success, I will express gratefulness and gratitude toward those who contributed a lot, even I didn't meet my target। तो वो जो आपका एक टारगेट होता है, अगर आप उसको अचीव नहीं भी कर पाते हैं तो भी हम ग्रेटफुल रहते हैं। जैसे सपोज इफ अ पर्सन सर्चिंग फॉर हिज और अ चाइल्ड, तो वो लोग जो उसको हेल्प करते हैं कि वो अपने बच्चे को जो गुम हो गया नहीं मिल रहा हो उसको वो ढूंढे, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं मिलता, तो फिर भी वो पर्सन जो है वो उनका शुक्रगुजार रहेगा कि भाई आपने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, मुझे हेल्प की, फिर भी मैं आपके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मतलब आपके लिए ग्रेटफुलनेस उसके अंदर होती है उन लोगों के लिए कि जो उस तकलीफ में उनके साथ होते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि ऑल द टाइम यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स और आउटकम जो है बिल्कुल आपकी मर्जी के मुताबिक हो, लेकिन इसके बावजूद वी रिमेन ग्रेटफुल टुवर्ड अदर्स। और होता है क्योंकि हम जो होता है ना वी आर स्किल वी पे अटेंशन ऑन द कंट्रीब्यूशन, तो वो उसका जो है ना हमारे जिस पर्सन का कंट्रीब्यूशन है वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू वंस कंट्रीब्यूशन रादर देन डिजायर्ड आउटकम। तो वो हमें जो है वो तब हम ग्रेटफुलनेस को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। Gratitude also has been placed in the class of empathic emotion because along with compassion it depends on the capacity to empathize with others. So we can locate the gratitude within empathic emotion because it also required empathy on the part of person, because we need to express empathy toward others if we do express gratitude. तो gratitude जो है वो या gratefulness जो है that also depends upon the empathy. If you are having a sense of empathy for others, then you will express gratitude whenever it required. तो जब कभी जरूरत पड़ेगी तो आप उसको express करेंगे। तो अगर आपके अंदर empathy नहीं है, empathic emotions ही नहीं है, तो फिर आप क्या किसी का शुक्रगुजार किसी के लिए हो सकते हैं। तो जैसे कंपैशन में भी यही होता है ना, तो यहाँ भी इसको जो है एम्पैथी जो है वो जरूरी इसके साथ एसोसिएट हम उसको कर सकते हैं, डिपेंड करती है। तो आप कैपेसिटी है कि आपने टू व्हाट एक्सटेंट यू
express or develop empathetic feeling for others. The gratitude also depend upon that. Each emotion is associated with a distinctive dramatic plot defining what is happening to the person and its significance for the person's well-being. What he also has referred to as emotions correlational theme. So our emotions are also associated with the distinctive dramatic plot or the scene or the scenario. We define what happened with a person and what is the significance of the event happened to a person for his mental well-being or for his emotional and psychological health. तो इसलिए जिसको हम ये कहते हैं कि इमोशंस कोरिलेशनल थीम कहते हैं ना, कि इसको हम ये इमोशंस हमारे कोरिलेशनल थीम्स हैं, कि हम अपने इमोशंस को डिफरेंट प्लॉट स्टोरी सीन्स होते हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं, हम उसके साथ एसोसिएट करके जो है वो इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं कि एक पर्सन के साथ क्या होता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है उसकी वेलबींग के लिए. तो ये इस तरह के जो इमोशंस होते हैं हम इनको कोरिलेशनल थीम के तौर पर समझते हैं. The dramatic plot for gratitude is the appreciation of an altruism gift. तो जो altruism gift होता है ना, जो दूसरों की वेलफेयर के लिए, कि we contribute something just for the sake of other person, so for the welfare of other person. तो यहाँ पे क्या है, gratitude क्या होगा, that will be the appreciation of that altruism gift, कि हम उसको appreciate करते हैं, उसके action को, उसके words को, कि suppose if a person has said good words during adversity and he or she has provided emotional support to the sufferer, so then a person will remember all those words and will appreciate his or her act. उसने चले कुछ और नहीं तो कुछ अच्छा तो कहा है ना, जैसे हम कहते हैं कि चलो कुछ नहीं हुआ, मुझे हौसला तो दे गया ना, मुश्किल वक्त में उसने मुझे हौसला दिया, मुझे हिम्मत दिलाई, तो ये भी तो गिफ्ट ही होता है, तो ऑल्ट्रुइज्म गिफ्ट होता है. तो टेंजिबल चीजें भी गिफ्ट में हो जाती हैं और अनटेंजिबल चीजें कि हमारे वर्ड्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, एक्शंस हैं, these are also considered as altruism gift. So altruism gift, the gift that is presented to sufferer or is given just for the welfare of another person. वहाँ से welfare involved होती है. Both giving and receiving of the gift involve empathy because one must sense the donor positive intention and the donor must sense the sense of the recipient. So this giving and receiving requires empathetic feelings and emotions. So ये जो इसमें इसलिए है कि जो देने वाला है ना, उसको भी ये चीज एक सेंस होना चाहिए कि ये जिसने दिया है उसकी इंटेंशन जो है वो पॉजिटिव है, वो ठीक है, कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, कि ऐसा नहीं है कि आप बदगुमान होते रहे. तो कौन करेगा, जिसके अंदर एम्पैथी जितनी ज्यादा होगी, तो देन यू विल कंसीडर इट as a positive thing, किसी पॉजिटिव एक्शन आप उसका लेंगे, उसकी इंटेंशन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. अदरवाइज ड्यू टू द लैक ऑफ एम्पैथी यू कैन इंटरप्रेट इट इन द नेगेटिव वे. और दूसरी तरफ जो डोनर है उसको भी जो रिसिपिएंट है, जो ले रहा है, रिसीव कर रहा है, उसकी नीड का एहसास हो, कि आपको पता हो कि हाँ ये इसकी जरूरत है, कि जैसे गिफ्ट होता है तो वो किस लिए दिया जाता है. जैसे अभी हमने फ्लड विक्टिम के लिए जो डोनेशन लिया, या जो पूरी जो नेशन जो है वो कर रही है, वो क्या देख रही है, दोनों चीजें है ना, कि वो देख रही है कि फ्लड विक्टिम को क्या चाहिए, उनकी क्या नीड्स है, इस वक्त उन्हें किन चीजों की ज्यादा जरूरत है. तो दैट्स व्हाई वी कलेक्टेड दोस आइटम व्हिच वाज रिक्वायर्ड. तो उनकी जो फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, तो वो जो उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें थी, एसेंशियल आइटम्स थे, वी कलेक्टेड एसेंशियल आइटम्स. तो वो जो उनकी नीड को कर रहा है, तो हमें भी देने वाले को भी पता हो कि लेने वाला जो उसकी जरूरत क्या है, और जो लेने वाला है उसको भी पता हो कि ये जो इसकी इंटेंशन जो है वो पॉजिटिव है. Appraisal components of gratitude encompass a motivationally relevant outcome, that is, तो वो अप्रेजल ग्रेटिट्यूड का क्या कंपोनेंट है, कि हम उसको किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं. उसमें एक तो ये है कि जो आउटकम है वो रेलिवेंट हो, वो चीज डिजायरेबल होनी चाहिए, मोटिवेशनली कॉन्ग्रेंट और डिजायरेबल फॉर द पर्सन, और वो पर्सन के लिए जो है वो डिजायरेबल है, और जो है वो कॉन्ग्रेंस होना चाहिए उसके साथ, उसकी जो पर्सन जिस चीज को डिजायरेबल कंसीडर करता है. क्रेडिट टू द एफर्ट ऑफ अनदर पर्सन, और इसमें जो दूसरा पर्सन जो एफर्ट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके लिए क्रेडिट भी इसमें होता है. तो आउटकम अगर जितना रेलिवेंट होगा और जितनी वो चीजें डिजायरेबल होंगी पर्सन के लिए, जिसको जरूरत है हेल्प की या जिसकी मदद के लिए, और जो एफर्ट कर रहा है पर्सन, उसको क्रेडिट दिया जाता है. तो अप्रेजल में ये तीनों चीजें होती हैं.
functionally, gratitude motivates a person to reward the other pro-social behavior. So, in essence, we can say that the gratefulness basically is related or is the way of rewarding the person who exhibit or express pro-social behavior, who has taken necessary action for the welfare of another person. तो वो लोग जो दूसरों के लिए एक वेलफेयर के लिए एक अच्छा काम करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं. Gratitude is the one way to appreciate or reward all those people. तो इसलिए हम जब grateful रहते हैं तो हम एक तरीके से ये मैसेज कन्वे करते हैं कि we are appreciating all those who devote something for the sake of others, who care others. तो वो थोड़ा उनको एक रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन देने का भी. Now, students, you are required to elaborate the concept of gratitude with reference to Pakistani culture. So, you have to discuss the concept of gratitude in considering in the light of Pakistani culture, in the light of our social values, norms and so on. तो आप अपने कल्चर को देखते हुए कि यहाँ पर ग्रेटफुलनेस का क्या एक है, ग्रेटिट्यूड का क्या कॉन्सेप्ट है, हम इसको किस तरह लेते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं. Students, you are being given 15 minutes to do that activity.